यहाँ पर हमने यूज किया है आरओ का मोटर। फर्स्ट टाइम इस मोटर का जो वाइंडिंग है इसको रिमूव करना होगा आपको। इसका जो वाइंडिंग था 0.30 गेज का वायर से इसका वाइंडिंग था, तो इसको मैंने चेंज करके रीवाइंडिंग करूंगा 0.23 गेज का वायर से। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होगा उसको रिमूव कर लेना है आपको। और इसमें जो पोल होगा आपको 16 पोल होगा, तो उसके अंदर आपको किसी एक पोल को पकड़ना है और दो पोल करके आपको दो साइड में छोड़ देना है। टोटल 5 पोल्स ले लेना है और आपको 0.23 गेज का वायर यूज करना है और आप यहाँ पर 30 टर्न्स दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 30 टर्न्स कंप्लीट कर लेता हूँ। ज्यादातर आरओ का मोटर का जो पोल है आपको 16 पोल होता है। 30 टर्न्स कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने वायर को रिमूव कर लिया है और उसके बाद आपको आगे वाला जो पोल होगा उससे आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 30 टर्न्स फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैं सारे जो पोल है उसको वाइंडिंग कर लूंगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। और भी जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट में विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो इसका स्पीड देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। मैं यहाँ पर 12 वोल्ट से दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस जो होगा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ग्राइंडर का हेड। मैं यहाँ पर पुराना लिया था, आप भी पुराना यूज कर सकते हो और नया आपको 500 रुपये पड़ेगा और पुराना आप 200 या 250 रुपये में मिल जाएगा।
मैंने यहाँ पर मॉस्फेट यूज़ किया है, देखिए ये। और ये मैंने 150 रुपये खर्चा हो गया था इसको बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए थ्रॉटल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 6 रुपये से ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको मैंने यूज़ किया है, देखिए ये। और ये आपको 36 वोल्ट तक आप देख सकते हो इसमें। और इसको मैं अगले वीडियो में किस तरह से बनाना है वो आपको दिखाऊंगा, देखिए। Nothing